Hello, everybody, and welcome to the 12th lecture of Computer Applications for Class 9th and Class 10th. In my previous lecture, I had discussed about if-else-if ladder. So now we are left with only one type of decision-making statements, which is switch case. So when do we use switch case? How do we use switch case? Everything I will be discussing. This topic is a very large topic. And when we study switch case, various subtopics are there. Those also we have to learn, we have to understand. There is something known as break. So what is the utility of break statement? There is a concept known as fall through. What is fall through? And what is the default statement written in the switch case block? So these are the things we will be discussing. Okay, now you must have visited an ATM machine. And when you see the screen displays various options to you. It says, you press on this button if you want to withdraw the cash. Press on this button if you want to know about your balance, the amount of your balance. Press on this particular button if you want to change your ATM PIN. And press on this button if you want to exit. So, they provide you numerous options, and you as a user have to select one of the options. So the option that you select is then further worked into by the compiler. Now, similarly, you must have also seen that when you call your customer care of any company, call the customer care of any company, so they give you various options. हिंदी में बात करने के लिए एक दबाएं, इंग्लिश में बात करने के लिए दो दबाएं, तमिल में बात करने के लिए तीन दबाएं, एंड देन सपोज यू प्रेस 2, देन उसमें जो होता है इंग्लिश में बात करने के लिए दो दबाएं. सो व्हेन यू प्रेस 2, सो दे हैव नाउ again they enter into option 2, and then they may have another set of options. Maybe product related complaint फाइल करने के लिए एक दबाएं, अपने प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में जानने के लिए दो दबाएं, ये काम करने के लिए तीन दबाएं, ब्ला 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 काम करने के लिए 4 दबाएं. So again you have various set of options provided by the computer or the mobile phone, and then you have to select another option. So you see, this is the concept of menu driven programming. You are given a list of menus, and you as a user have to select one option from the various options, and the option that you select is then taken by the compiler, and the necessary function is done. Such programs are known as menu driven programs. Okay, menu driven programs. So today we will be learning how to write menu driven programs. Means you as a programmer will write a program, will develop a program, which is when run, then the output screen will display certain options, and the user will have the opportunity to select one of the options, and then he will get a necessary output depending on the option that he has selected. For writing such menu-driven programs, we use switch case. Switch case is basically that provision or that statement in Java which allows the programmers to develop menu-driven programs. How do we do that? Let us now understand. Give the heading switch case. So the S of switch is small, the C of case is also small, switch case. Let us write down a few lines about switch case. Write down the switch case statement in Java
allows the programmer to develop menu driven programs. So I hope this term menu driven program is clear. So a program which will give a list of menus to the user and ask him to select any one of the options. So develop menu driven programs which give the user an opportunity to select one of the options from the displayed list of options. ठीक है, वेरी क्लियर. तो प्रोग्राम का क्या मैकेनिज्म होगा? सबसे पहले प्रोग्राम यूजर को बोलेगा कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं. द वे the ATM also displays the various options. You press this button for cash withdrawal, press this button for balance inquiry and all. So पहले वो अपना options display करेगा, and then it will ask the user to enter the choice. अब आप अपना choice यानी अपने option को enter करो. So that option which the user will enter needs to be inputted and needs to be saved properly in a variable, and then a necessary decision must be taken that since the user has inputted this option, this number as an option, so this particular task needs to be done. So there is a decision taking by the compiler. Therefore, this is a decision making statement. Switch case is a decision making statement. Let us understand what is the syntax of switch case. Syntax means the format for writing the switch case statements. So the first thing we do is we write switch. I repeat, the S of switch is small, means in lowercase. All the letters in this word is in lowercase. And switch लिखने के बाद in round braces we write the name of that variable in which the option entered by the user is stored. What do I mean by this? Suppose the program displays 4 options. एकदम simple सा एक programming concept हम समझते हैं. Suppose the program displays 4 options. Okay, option 1 to add 2 numbers. Option 2 to find the difference of 2 numbers, means to subtract 2 numbers. Option 3 to multiply or to find the product of 2 numbers. And option 4 to divide 2 numbers. ठीक है, 4 ऑप्शन है कि यूजर को बोला गया अगर आप 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो कृपया 1 दबाएं, अगर आप 2 नंबर्स को सबट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 2 दबाएं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3 दबाएं, और अगर आप 2 नंबर्स के क्वोशिएंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं यानी डिवाइड करना चाहते हैं तो 4 दबाएं. आप अपनी ऑप्शन अपनी जो चॉइस है उसको एंटर करें. सो सपोज द यूजर एंटर्स 3 एंटर करता है. His choice is 3. So this 3 will go and get stored in a proper variable which is already declared for this purpose. तो मान लेते हैं कि वो जो वेरिएबल है वो एक ये जो नंबर है 3 that goes and gets stored in a variable which is already declared in a program, और उस वेरिएबल का कुछ भी नाम हो सकता है. Let me take the variable name is s. So there is a variable which is s, and this 3 goes and gets stored in S. So this variable needs to be written here. यहाँ switch के बाद हम यहाँ S लिखेंगे. जो भी नाम है इस वेरिएबल का, if the name of the variable is O, so I have to write switch O instead of S. I have to write O. So that depends on the programmer what variable name he has given. तो मान लेते हैं S, तो S I have written, and then we open the brace for the switch block. Okay, and here we will start with the first case. Now, since we are writing a generalized syntax, so instead of S, I am writing the name of this S, which is generally known as
test expression. S is basically that variable which will store the choice entered by the user. I'm repeating it over and over. Understand what is this test expression in switch? The test expression is that variable which stores the choice entered by the user. Okay, so after that we started this brace for switch, and then we will write case, C small, A small, S small, E small. Every letter is so small letter. Case, space, and then the various options. So the first option is 1, right? 1. So I will write case 1. And after writing case के बाद एक space देंगे and then 1, and then I will write colon, not semicolon, colon. इसे colon बोलते हैं. Colon दिया, and after writing colon, I will write those statements which are required for this first option. मतलब दो numbers को add करना है, तो add करने के लिए मुझे जो भी चीजें करनी है वो मैं इस case 1 के statements में लिखूंगा. तो this will be, you know, the statements under this case 1. और जैसे ये complete हो गया, I will end this case by writing break. अब मैं ये break का क्या काम है, break क्यों यूज करूंगा, और इसको यूज नहीं करूंगा तो क्या होगा, I will discuss in detail. Don't worry, it is very easy to understand what is the role of break statement. लेकिन as of now बस अभी समझो कि case 1 लिखा और case 1 के जो statements है उसको लिखा, and then I ended this case by writing a break statement. After that I will begin with the case 2. Case 2 means whatever is to be done if the user enters 2 as an option. So those statements are written here, followed by a break again for this case 2. Similarly, you have another case, case 3. So there can be any number of cases, case 3, case 4, और भी options हो सकते हैं, case 5, case 6, जितने भी innumerable cases are possible. And after all the cases are over, we write default. Now, what is the use of default? ये भी मैं discuss करूँगा. और अभी फिलहाल के लिए ये syntax लिखो, मैं detail में discuss करूँगा. बहुत easy है. Default and then colon, and then you write the statement under the default block, default statement, but you do not write break here. Make sure कि default के अंदर में हम break का use नहीं करते, सिर्फ individual cases के अंदर में हम break लिखते हैं, default में कोई break नहीं होता है. Default हो गया, and then we will close this entire switch block. हमारा ये switch block यहाँ enter open हुआ था, यहाँ close हो गया. So this is the syntax of switch case statements. If you see clearly that we have not used any opening and closing braces for individual cases. देखो हमने ऐसा नहीं किया कि case 1 लिखा और case 1 का braces open किया, ये गलत है. Case 2 का भी कोई braces नहीं है. So case 1, case 2 default, they don't have their individual braces. जो एक ही जगह ब्रेस यूज करते हैं वो है स्विच को ओपन करते हैं एंड डिफॉल्ट के बाद हम स्विच को क्लोज कर देंगे. सो वन ओपनिंग ब्रेस एंड वन क्लोजिंग ब्रेस, दैट्स इट. देयर आर नो इंडिविजुअल ब्रेसेस फॉर ईच केस. ठीक है, सो दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. ये हो गया. नाउ until and unless we do an actual program, we will not be able to understand this properly. So let me explain you an actual program and also how does the program work. After that, I will explain you the role of break statement and default statement also. Let us think about a program where the user enters a day number and then an appropriate day name is printed. What do I mean? Suppose the user enters 1. So when he enters 1, the output screen prints Monday. That means an appropriate day name gets printed when any day number is entered. So the day name corresponding to that day number gets printed. This is the objective of the program. Suppose the user enters 4. So what is the 4th day of the week? Thursday. So Thursday gets printed.
So this is the objective of a program. Let us discuss how do we do this program. देखो इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो ऐसा जो प्रोग्राम हमें करना है, प्रोग्राम का नाम लिखो, गिव द हेडिंग, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर an appropriate day number from 1 to 7. 1 से 7 के बीच ही होगा ना, 7 दिन होता है वीक में. So the number needs to be either 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7 and nothing else. So a program to enter an appropriate day number and print the corresponding day. Print the name of the corresponding day. So the first day of the week is Monday. So if 1 is printed, 1 is entered, Monday gets printed. Now this program can be done with if else also. So you see this particular program can be done by if else as well as switch case. देखो if else से करेंगे तो प्रोग्राम बहुत सिंपल सा है. तो मुझे एंटर क्या करना है, एक नंबर एंटर करना है. वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या 7 हो सकता है. या यूजर कुछ दूसरा नंबर भी एंटर कर सकता है अदर देन 1 to 7 बिकॉज यूजर हैज द फ्रीडम टू एंटर एनी नंबर एक्चुअली. इवन इफ द प्रोग्राम विल डिस्प्ले अ मैसेज कि you have to enter a number between from 0 to 1, but the user has the freedom to enter any number. So if any other number which is outside this range 1 to 7 is entered, then what message needs to be declared to the user? An error message needs to be declared. वो सब हम कर सकते हैं. तो मैं पहले इस प्रोग्राम को if else से तुम लोगों को समझाता हूँ. तो मुझे इस प्रोग्राम में इनपुट लेना है क्योंकि यूजर से मुझे डे नंबर लेना है. तो इनपुट लेना पड़ेगा और इनपुट लेकर उसे मैं स्टोर भी करूंगा दैट नंबर विच आई विल टेक इनपुट. अच्छा, द प्रोग्राम्स विच हैव इनपुटिंग and we will take the input using scanner class. The first thing is that we will use the import statement, import and then the package name which is java.util.star. So I have imported all the classes in this java.util package. So scanner class also, which is present in this util package, gets imported in my class. Now I will declare the class name. Say the class name is day, for example. So then I will declare the void main, static void main, या सिर्फ void main भी लिख सकते हैं. And inside this, I will declare a variable of int data type because the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is an integer number. So the variable name is say day, day, day. So this day variable is of int data type. It will store the day number entered by the user. अब मैं इस यूजर को बोलूंगा system.out.println enter a day number from 1 to 7. ठीक है, उसको मैं बोलूंगा. एंड you very well know how to take input क्योंकि मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में, लेक्चर 10th और लेक्चर 11th में मैंने इनपुटिंग के बारे में ही वो समझाया है. तो मेरे जो लास्ट 2 लेक्चर्स है उसमें मैंने बहुत डिटेल में हाउ टू टेक इनपुट वो डिस्कस किया है. तो यू नो हाउ टू टेक इनपुट ऑफ अ सिंगल इंटीजर. तो ये डे पे जाएगा. दिस नंबर विच विल बी एंटर्ड बाय द यूजर विल गो इन विच वेरिएबल डे. सो डे इज इक्वल टू sc dot next int, but then here I have missed out writing the object creation of the scanner class. तो मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं मैं. इस मेन को जैसे मैंने ओपन किया, लेट मी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास. स्कैनर sc is equal to new scanner. So ये मेरा छूट गया था. system.in. Okay, so the object for scanner class is created, and through this object I will call call this next int method, which will allow the number entered by the user to go and get stored in this variable day.
तो day is equal to sc dot next date. This is how we take inputs, you know it. चलो अब मैं इस प्रोग्राम को आगे इफ एल्स से भी कर सकता हूं या स्विच केस से भी कर सकता हूं. तो लेट मी एक्सप्लेन विथ इफ एल्स फर्स्ट. मैं लिखूंगा इफ डे इज इक्वल टू 1. मतलब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं कि अगर जो हमारा वेरिएबल है डे उसमें अगर 1 स्टोर्ड है, मींस डे इज इक्वल टू 1. सो हियर आई हैव यूज्ड द इक्वालिटी ऑपरेटर व्हिच इज अ रिलेशनल ऑपरेटर. तो क्या प्रिंट होगा? system dot out dot println which day needs to be printed? Monday. तो आउटपुट स्क्रीन में Monday प्रिंट होगा. इसके बाद अगर ये नहीं हुआ, so we will use else if ladder, isn't it? If else if ladder. The next is मैं इधर कर रहा हूं. इसके बाद else if day is equal to 2. अगर day का वैल्यू 2 है, इसके अंदर क्या होगा? system dot out dot println Tuesday. देखो मैंने SOPLN लिखा है लेकिन तुम्हें पूरा लिखना है system dot out dot println Tuesday. Now, अगर ये भी नहीं हुआ, else if day is equal to 3, तो फिर system dot out dot println Wednesday. अब आगे लिखते जा सकते हो. You can write else if day is equal to 4, system dot out dot println Wednesday, then Thursday, Friday, Saturday, Sunday. तो हमारा जो चलते जाएगा, लास्ट केस जो हमने लिखा, लास्ट else if लिखा, else if day is equal to 7, and here we will write system dot out dot println 7th day is Sunday. लेकिन अगर मान लो यूजर 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा कोई दूसरा नंबर इनपुट करता है, सपोज वो 8 इनपुट करता है या 10 इनपुट करता है या -1 इनपुट करता है या 0 इनपुट करता है या 99 इनपुट करता है, एनी नंबर अदर देन दिस रेंज, तो उसे बताया जाना चाहिए कि नो, योर एंटर्ड नंबर इज रॉन्ग, इट इज एन इनवैलिड इनपुट, है ना. यू हैव टू ट्राई अगेन. एक अप्रोप्रिएट एरर मैसेज मुझे देना है. सो ये सब एल्स इफ के बाद भी हमारे पास एक और लिखना बाकी है. लेट मी मेक इट स्मॉल अ बिट. जगह की कमी है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया. एंड लेट मी टेक इट अप. अब हमें क्या करना है? ये सारे इफ एल्स इफ तो हो गए, बट फॉर द लास्ट possible case we will write else. Else means if none of these else ifs and not even this if gets evaluated true, then this else part will get evaluated, where I will write system dot out dot println incorrect choice या incorrect option या इनकरेक्ट नंबर, इनकरेक्ट डे नंबर, कुछ भी. कि या फिर लिख सकते हो यू हैव एंटर्ड एन इनकरेक्ट डे नंबर, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 फ्रॉम 0 to 1. मतलब एक अप्रोप्रिएट मैसेज होना चाहिए. तो इफ यू रिमेंबर in my last lecture I had told you that writing this else part depends on the need of the program. अगर ऐसा प्रोग्राम है जहां पे लास्ट का else part की मुझे जरूरत नहीं है तो नहीं लिखूंगा. जैसे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 11th में हम लोगों ने इफ एल्स इफ लैडर पर एक प्रोग्राम किया था where the percentage marks of a student needs to be entered and an appropriate grade needs to be printed. प्रीवियस लेक्चर में ही है वो प्रोग्राम, देख लेना. वहां पर मुझे सिर्फ इफ एल्स इफ का यूज करना पड़ा था, द लास्ट एल्स की जरूरत नहीं थी. लेकिन इस प्रोग्राम में हमें ये एल्स की भी जरूरत है क्योंकि यूजर 1 to 7 के अलावा भी कोई दूसरा नंबर इनपुट कर सकता है, जैसे कोई भी नंबर अदर देन 1 to 7. तो उस केस के लिए उसे मुझे बताना है कि आपने गलत नंबर एंटर किया है. ठीक है. सो विद दिस प्रोग्राम आई थिंक इफ एल्स इफ लैडर का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया. अच्छा, ये तो हमारा प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट हुआ. अब मैं मेन को बंद कर दूंगा, ये मेन जो यहाँ स्टार्ट हुआ था, और अब मैं क्लास को भी बंद कर दूंगा, एक और ब्रेस लगा दूंगा. नाउ माय प्रोग्राम इज डन. सो यू सी दिस इज हाउ आई हैव completed the program. Now this program can be written in switch case also. Now what I want you people, those who are watching this video on YouTube, you people will write this program in your notebook and then run this on your BlueJ system. All right, and get the appropriate output. You will write in both using switch case also and using if else also. तो ये स्विच केस हो गया. अब मैं इसी प्रोग्राम को इफ एल्स में कैसे लिखूंगा?
So I will erase this stuff now. Before I erase, I want you all to pause the screen if required and write down the program. See here, I have put dots because I want you all to write this this remaining part, this leftover part. You have to write the full program and then get the output. वो तुम लोग लिख लोगे. I know all of my students, those who are watching, are smart enough. They know that ये जो बीच में मैंने डे 3 के बाद डायरेक्ट डे 7 लिखा है, तो बीच में डे 4, डे 5, डे 6 का मैंने नहीं लिखा है. You will write this and then you will run the program. ठीक है, हो गया. Now I'm erasing it. देखो, टिल दिस पार्ट, या जो हमने डे नंबर इनपुट लेना है, ये कॉमन है. मैं स्विच केस यूज करूं या मैं इफ एल्स यूज करूं, इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा. इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा. लेट मी इरेज इट. सो नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल आई डू? मैंने जो सिंटैक्स दिया वो सिंटैक्स को फॉलो करूंगा. अब मैं स्विच लिखूंगा. स्विच, यू सी दिस इज द सिंटैक्स. मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है. स्विच लिखूंगा और उसके बाद मैं टेस्ट एक्सप्रेशन लिखूंगा. टेस्ट एक्सप्रेशन मींस दैट वेरिएबल व्हिच कंटेन्स द ऑप्शन नंबर. तो मैंने ये बोला था यहाँ पे, जैसे ये s यूज किया था यहाँ पे कि वो उसका ऑप्शन अगर 3 है तो 3 विल बी स्टोर्ड इन s and s will be the test expression. In this case, which is the option number? It is actually the variable which stores either 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7. Because depending on that, you will get an appropriate output. So that variable is day. So here the test expression is day. We will just write day, switch, and then in bracket day. And then I will open the switch block and then case 1. Case 1 means what? If the value of this variable day is equal to 1, then case 1 will be evaluated. And under case 1, I will write system.out.println, the message that needs to be printed for if day is equal to 1. That means it is Monday. So case 1 में क्या print होगा? Monday. Then I have written break. ये break का क्या काम है मैं अभी थोड़ी देर बाद इस पे डिस्कस करूंगा. break लिख दिया मतलब case 1 end हो गया. After case 1, I have to write case 2. Case 2 means what? If the value of day matches with this number 2. That means if the value of day is 2, तो system.out.println क्या प्रिंट होगा? Tuesday. उसके बाद इस केस को मैं बंद करूंगा, ब्रेक. देन केस स्पेस 3, केस 3. फिर इसका मतलब क्या है कि इफ द वैल्यू ऑफ डे मैचेस विद 3, दिस केस नेम. सो फिर system.out.println Wednesday. Then break to end this case. And in the same way, it will continue for case 4, which is Thursday, 5, 6, 7. So case 7 का मैं डायरेक्ट case 7 लिख रहा हूँ. ये जो बीच में मैंने छोड़ा ये तुम लोग लिख सकते हो अपने से. Case 7 is where we will print Sunday. Complete हो गया हमारा और ब्रेक भी मैंने दे दिया. But now, if the user enters any number other than this range, other than 1 to 7. So here in switch case, we have an option for the default statement. The default, this is a keyword. Default is a keyword. Compiler identifies it. Default लिखेंगे and colon देंगे. ये जो मैंने बताया था ना यहाँ default, ये उसी purpose के लिए है. This default keyword and default statement is for that purpose that when no case, none of the cases matches with the test expression, then the default statement gets executed. मैं लिखा दूंगा आगे कि if none of the cases matches with the test expression, then the default case gets executed. तो default में मैं लिखूंगा वो error message जो मैंने if else के केस में else लास्ट में जो else लिखा था ना उसमें लिखा था कि incorrect input, आपने गलत इनपुट डाला है, ट्राई अगेन. और डिफॉल्ट में ब्रेक नहीं लिखते. एंड देन आई विल क्लोज द स्विच. आफ्टर क्लोजिंग स्विच आई विल क्लोज दिस मेन. आफ्टर मेन आई विल आल्सो क्लोज द क्लास. तो मुझे मेन और क्लास तीनों को क्लोज करो, दोनों को क्लोज करो. तो मैंने ये प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया. नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम इन ब्लूजे एंड आई विल शो यू. सो आई हैव टाइप्ड दिस प्रोग्राम ऑलरेडी
And here you can see I'm going to my BlueJS screen. You can see on my screen that this program is already typed. You see the same program, so that I can show you by running. So the name of the class is day. You can see day, और यहाँ पे भी मैंने class का नाम day रखा है. And here I've created the main method, then scanner sc मैंने object create किया है, और मैंने यहाँ पे int s is the name of the option. So in the whiteboard I had written the variable name day, लेकिन मैंने यहाँ पे s लिखा है. So no problem, you can keep any name. तो s will store the day number. Enter a day number from 1 to 7. ये print होगा, और ये जो भी नंबर एंटर होगा वो s में चला जाएगा. और मैंने स्विच s लिखा है बिकॉज s इज दैट टेस्ट एक्सप्रेशन. तो s का वैल्यू अगर 1 है, केस 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, मंडे विल बी प्रिंटेड, एंड देन दिस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन. ऑलराइट, हो गया. मैंने यहाँ प्रिंट लिखा है, यहाँ प्रिंट ln लिखा जा सकता है. एंड यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट ln, एंड आई हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, अ सेपरेट लेक्चर वेयर आई हैव explained in detail the difference between print and print ln. So go watch that lecture if you have any confusion about print and print ln. And you see at the end, after case 7, I have written the default statement where I have written incorrect choice. Yeah, incorrect choice na likhe incorrect input likh deta hu, incorrect input. ठीक है. Now I will compile this. तो मैं compile दबाया and you see class compiled, no syntax errors. Now I will go to my BlueJS screen once again, and here this day is that class. I will run void main, and the output screen will come up. It asks enter a day number from 1 to 7. So suppose I am entering 4. So 4, and then when I press enter, so immediately it prints Thursday, because when I entered 4, the 4 gets stored in which variable first? S. And S के साथ compare करता है कौन सा केस. S has 4 because वो मैंने कोड लिखा था S is equal to sc dot next int. तो फिर वो केस के साथ कंपेयर करता है, केस 1, केस 2, केस 3, एंड देखता है कि केस 4 gets matched by S. S is the switch, no? तो switch का जो एक्सप्रेशन है वो 4 के साथ मैच करता है. केस 4 में थर्सडे प्रिंट होता है, एंड थर्सडे आ गया हमारा. Simple. I will run it now by entering any other day, say 7, the last day. तो मैं 7 लिखता हूँ, Sunday आ जाएगा. Sunday got printed. Now I will show you if I enter any number other outside this range. So void main, and now you see enter a number from 1 to 7. So although the message says me that I have to enter from 1 to 7, but suppose I enter 9. So this is a wrong day number. So which block, which statement will get executed? The default statement. So default statement में लिखा हुआ incorrect input, and you see incorrect input आ जाता है. ठीक है. So see how nicely it is giving the output. Now I will go back to my editor section, and here what I want to do, I want you all to, write this program in your notebook, the one which I wrote in switch case. If you need to pause the screen, you can pause the screen. All right. And you also run it on your system. Unless and until you people do it on your own in your system, you will not be able to develop that good command over the programming concept. You have to do it. Okay. Now I will explain you what is the utility of this break statement. So now I will erase all of the break statements in each case, and I will show you how the difference will come in the output. So let me erase all the break statements from all of the cases first of all. And then you will realize that there is a very big difference in the output. And then I will explain you the entire mechanism of what actually happens when I use break and when I don't use break. So देखो मैंने सातों केसेस में से break को हटा दिया. ठीक है. Now what will happen? You listen. Suppose the value of S, this S, is 3.
entered by user is 3. So, you know, when it goes to match with case 1, it does not match because 1 and this S, which is 3, they are not equal. So case 1 to match nahi hua, case 1 will not get executed. Case 2 will also not get executed because S has a value of 3. But when it goes and tries to match with case 3, it gets matched. The value of this S and this 3 are equal, and then case 3 is matched. So Wednesday gets printed on the output screen, Wednesday. But then what happens, since there is no break, what will happen? Each and every other case which follows this matching case. देखो ये जो case 3 है ये हमारा matching case है ना, ये matching case. And all the other cases are non-matching cases. लेकिन मैंने break नहीं use किया, तो matching case के बाद जो भी consecutive cases हैं, each and every case will also get executed, even if they are non-matching case. Again, I am repeating, even if these cases, case 4, case 5, case 6, case 7, and the default case are non-matching cases, they are not, their case number is not equal to the value of S, but in spite of this fact, these cases will get executed until and unless there is any break statement in the middle. But since there is no break statement, it will execute, the compiler will execute all of these cases. That means Wednesday तो print होगा ही क्योंकि वो matching case है. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and even this incorrect input will be printed. And since I have not written print ln, I have written print. So each and every statement will be printed in the same line. So Wednesday के बाद यहाँ Thursday, then Friday, then you have this case 6 का Saturday. Means all of the cases will get executed. Then Sunday, and even the default case, incorrect input. तो जहां पे मैचिंग केस हुआ उसके बाद जितने भी उसके फॉलोइंग केसेस हैं वो सब एग्जीक्यूट होगा unless and until there is a break statement. And if suppose I write a break statement maybe here, for example, in case 6 you keep a break statement, you have not erased it, for example. तो case 3 में Wednesday तो print होगा ही, Wednesday print होगा. Then case 4 में Thursday print होगा, case 5 में Friday print होगा, and case 6 में Saturday print होगा. But then since there is a break statement, so because of this break statement, the compiler will come out of this block. It will not go to case 7 and default. तो या तो जहां पे break है वहां तक execute करेगा, अगर break कहीं नहीं है, so it will completely execute all the cases which are following the matching case. That means what did you learn? What is the use of this break statement? ये break जो मैंने use किया था, वो break का काम क्या था? Break क्या करता है? It transfers the control of the execution outside of the block. मतलब case 3 में अगर मैं यहाँ break लिखता हूँ, if break is present, so the moment Wednesday is printed on the output screen, immediately because of this break statement, which is after printing the break, printing the Wednesday, ये break क्या करेगा? It will transfer the control out of this block. Block means this switch block. The switch block starts at this curly brace and ends at this curly brace. So wherever break is found, the compiler ka control is transferred out of the block. That means no case following the matching case gets executed, and this is what I want. Therefore, it is very important to write break in each of the cases so that whenever there is a matching case found, only that case gets executed and the control of the compiler is immediately transferred out of the switch block. And that is why we write break. So break is basically a jump statement. So there are 3 jump statements in Java. I will have a separate lecture on jump statements in Java. So where you will learn about break. Break is a jump statement, which we have just now studied. There is one more jump statement, continue statement, and there is another one is system.exit. We will learn about all of these jump statements later in a separate video. But as of now, you should know that break is a jump statement because it is allowing the compiler to jump
It is transferring the compiler control to jump and outside the switch block. So this is how it is working. Now I will show you actually. मैं इसको run करूंगा. अभी हमारे जो भी cases हैं, none of the cases have any break. ठीक है? So मैं run करता हूँ. एक बार compile कर लेता हूँ. Compile and you see it shows no syntax error. Close करेंगे. And here you have the Vue.js screen where I will void main और मैं इसको खोलूंगा and you see it is asking enter a day from 1 to 7. You should remember that there is no break statement. तो मैं क्या करता हूं, मैं अभी यहाँ पे 4 एंटर करता हूं और जैसे मैं 4 एंटर करूंगा Thursday will be the matching case. But then since break is not there, Thursday तो प्रिंट होगा ही, साथ साथ फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट है जिसमें मैंने इनकरेक्ट इनपुट लिखा है वो भी प्रिंट होगा. तो यू सी आई एम प्रेसिंग एंटर एंड यू सी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड इनकरेक्ट इनपुट without any spaces and not even in different lines because I had used print and not print ln. अगर मैं print ln यूज करता तो अलग अलग लाइंस में प्रिंट होता, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अलग अलग लाइंस में प्रिंट होता. अच्छा, now I will modify the program and I will write break in any one of the cases. Say I'm writing the break in case 6, for example. And अब मैं इसको compile एक बार करता हूँ. No syntax errors. I'll take you to this day and void main. तो देखो बोल रहा है enter a day number from 1 to 7. इस बार मैं 3 एंटर करूंगा. अच्छा याद रखना मैंने 6 में ब्रेक लगाया तो केस 3 तो एग्जीक्यूट होगा ही. That means Wednesday will be printed, but then case 4 will also be printed because case 3 में break नहीं था. So case 4 भी execute होगा, case 5 भी execute होगा, case 6 भी execute होगा and case 6 में हमने break लगाया है. So वहां से case 6 का print करने के बाद the control will go out of the block. That means case 7 and the default block will not be executed. That means Sunday will not be printed and incorrect input will not be printed, but Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ये सारे print हो. You see, I have pressed the enter key and Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So from case 3 to case 6 सारे print हो गए, सारे execute हो गए. So this is the importance of break statement. ये जो break use मैं नहीं कर रहा हूं और बिना break के use किए जो उसके बाद के सारे केसेस कंसेक्यूटिव केसेस जो कि नॉन मैचिंग केसेस होने के बावजूद दे आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड. दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज फॉल थ्रू एंड फॉल थ्रू इज एन अनडिजायरेबल सिचुएशन क्योंकि ये मेरा इनकरेक्ट आउटपुट आ रहा है. अगर मैं 3 एंटर कर रहा हूं तो सिर्फ वेडनेसडे ही प्रिंट होना चाहिए, लेकिन फॉल थ्रू हो रहा है एंड इट इज also executing the non-matching cases because I have not written the break statements, and this condition is known as fall through. So now we will write down about fall through and the importance of break statements. So first of all, write down. Now we will discuss what is fall through. Write down, if we do not use break statement, at the end of each case, the program will execute all consecutive case statements, consecutive case statements until it finds next break statement
or till the end of switch case block, or till the end of switch case block. Okay, this condition is known as फॉल थ्रू. ठीक है, इसका मतलब कि फॉल थ्रू को अवॉइड करने के लिए हम हर केस में ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं. सिंपल बात. एंड डिफॉल्ट का यूज तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसको लिख लेते हैं. इफ none of the cases matches with the test expression of switch statement of switch, simple switch, then the default statement gets executed. अच्छा, इस चीज का भी हमें ध्यान देनी है. The default statement has no break. The default statement has no break. All right, simple. And here we have completed the topic for switch case statements. But now we have to discuss programs on switch case. I will also discuss the previous years में पूछे गए questions in my coming lectures. Till then, have a nice day and subscribe to my channel if you have not subscribed yet, and share with all others. Have a nice day. God bless you all. Take care.